Good afternoon, my viewers. I hope you have at least heard Life Lessons 1 and Life Lessons 2. There has been a great urge and a large number of people who have really enjoyed these Life Lessons 1 and 2 are waiting for my Life Lessons 3 and 4. So, without wasting much time, let's go into Life Lesson 3, where the age group of the girl child will be, whether a girl child or boy child, will be 3 plus to 7, and how the parents' behavior is and what the child is thinking. Now, when the child is 3, there's a big line of demarcation from the home life to the school life of the child. Oh my, it's a big tension. From 2 years, the child, rather, some of the parents, even when they're pregnant itself, they start, worrying where to put the child, which type of school will they put, what is the fee structure of that school. My gosh, private school, public school, central school, medium of education. All these things are evolving in the minds of parents. I will speak little in Hindi also so that a large number of people can understand. जब बच्चा अभी जन्म भी नहीं हुआ, अभी कोख में ही है माता जी के, उसके पहले ही पेरेंट्स की टेंशन हो जाती है कि कौन से स्कूल में उसको एडमिशन डालना, हिंदी वाली, सेंट्रल वाली, प्राइवेट वाली, स्टेट बोर्ड वाली, सीबीएसई वाली, आईबी बोर्ड वाली, क्या मेरे स्टेटस के मुताबिक है कि नहीं। इस सारी परेशानियों से अभी तो बच्चा जैसे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, बस खत्म। फिर तो उनका फुल फ्लेज्ड वही बातों में भी लोग आते हैं घर में या किसी से मिलते हैं तो भी वही पूछते पहले, आपके बच्चे कौन से स्कूल में, आप कैसा लगता है वो स्कूल, वो बच्चा कर पाता है। हर एक बच्चा यूनिक है, वो एक आप धारणा बस समझ ही जाइए। आपके बच्चा किसी और के साथ कंप्लेन या कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है। आपके बच्चों के बीच में भी ये जो आप कंपैरिजन करते, ये वाला बच्चा तो वो दूध लेके आता है, ये वाला बच्चा तो सबसे अच्छा ड्राइंग करता है, ये वाला बच्चा तो पोएट्री पढ़ लेता है, ये वाला बच्चा तो आंसर्स दे देता है, ये वाला बच्चा तो कुछ करता ही नहीं, बैठा ही रहता है। प्लीज ऐसे मत कीजिए। हर एक बच्चा के अंदर जो गुण है, कोई भी बच्चों से कंपेयर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है कि हर एक बच्चे में इतनी अच्छे-अच्छे गुण हैं, इतना प्रभावशाली हो जाता है बच्चा। आप कैसे उसको देखते, कैसे उसको उसकी मनोकामनाएँ, कैसे उसकी भावनाएँ समझते हैं। और ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ वो जैसे रोए वो दे दें, ऐसी नहीं है। पर बच्चा क्यों वो कर रहा है? क्या हुआ? क्या उसको अच्छा लगा? क्या नहीं अच्छा लगा? क्या चीज़ें उसको चाहिए? अरे आप बच्चों की मनोकामना, बच्चों के दिल वो जो फूल जैसी है, जब वो छुटपन में होते हैं, थोड़े-थोड़े बड़े होते ही शैतान होते हैं, नॉटी हो जाते हैं, फिर थोड़े बड़े मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही तो बच्चे बड़े होते हैं। इंडिया में तो एटलीस्ट हम बच्चों के साथ थोड़ा लगाव तो रखते ही हैं जब तक वो शादी ना करें। दूसरे कंट्रीज़ में तो इतना भी नहीं है, माँ-बाप तो बस छोड़ के जाते हैं, वो अपने आप ही 10 साल, 10-12 साल हो गया, बच्चा अपने आप ही अपना रास्ता ढूँढ लेता है, खुद ही अलग रहता है। 5 साल के पहले तो उसको अलग सुला देते हैं। ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं है। अभी भी हमारी वो बॉन्ड है, हमारी वो कंसर्न है, बच्चों को ऐसे रखते हैं, बच्चों के साथ हम रहते हैं और बच्चों को बड़े होने देते हैं। उनकी खुद की ही भावनाएँ जो उनको अच्छा लगे, जैसे म्यूज़िक में अच्छा है, शूटिंग में अच्छा है, हॉर्स राइडिंग में अच्छा है या कुछ भी हो, तो हम उसी में ही हम उसको डेवलप करते हैं। लेकिन ऐसा फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है। वो माँ-बाप के बीच में अंतर उनको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है बच्चों के लिए। किसी को देखना दूर की बात है। आपके कोई चाचा, मामा, दोस्त कोई भी है,
तो आप जाके खुद कैसे हो, मैं आ रही हूँ, सवाल ही नहीं। उनको बोलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि हम आ सकते हैं, आप घर में होंगे। अब कितना टाइम आप बैठोगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका एक-एक घंटा डॉलर्स एंड पाउंड्स में है। तो उनके पास तो टाइम नहीं है आपके लिए बातों करने में, और फालतू उनको तो सब फालतू ही लगता है। कोई ज़रूरी नहीं, जब चाहिए तो देख लो, अपने आप देख लो। अभी तो हमारी उम्र ऐसी है जो हम चीज़ें कमाएँ। तो लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट इन वेरियस कंट्रीज़। लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट इन आवर ओन कंट्री, इन आवर ओन फैमिली। आप देखो, हर एक जो पर्सन आपके साथ रहता है, हर एक का जो लगाव है, जो क्वालिटीज़ है, वो इन टैलेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, अंदरूनी टैलेंट्स, अंदरूनी चीज़ें हैं जो बच्चों को छुटपन में अच्छा लगता है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जब बच्चे को एडमिशन ही लेना है स्टेट बोर्ड में, क्यों हम लेते हैं? क्योंकि वो जो स्टेट में रहते हैं उसी लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। दूसरा कि फीस भी बहुत सबसे ज़्यादा कम स्टेट बोर्ड में है कंपेयर टू सीबीएसई या आईसीएसई या आईबी। अच्छा, सीबीएसई में क्या है कि एक सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स नहीं है, थ्रू आउट द ईयर हमारा असेसमेंट होता है। असेसमेंट जैसे ऑब्जर्वेशन से होता है, आपका छोटे-छोटे असाइनमेंट्स देते हैं, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं। वो पूरा 100 मार्क्स का नहीं है, कहीं 20 मार्क के लिए, 30 मार्क्स के, फिर ओरल टेस्ट होता है। तो अलग-अलग चीज़ों से असेसमेंट होता है। तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपके बच्चों को फिर से सपोज़ फर्स्ट एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं किया, पहले बार बच्चे ने लिखा है या पढ़ा है या बोला है इतने बच्चों के सामने, हो सकता है कि बच्चा ने इतना अच्छा बोला नहीं होगा, तो उसमें क्या है, एवरी टाइम 99% बोलना ज़रूरी नहीं है। और बच्चा जो लाता है एक्सेप्ट कीजिए, और वो उसकी पैरामीटर नहीं है कि बच्चा कैसा है। अच्छा, तुझे तो बस सी ग्रेड ही लाता है और वो डी ग्रेड लाता है, तो तू तो क्या करता है? मुझे समझ में नहीं आता है। हम तो इतने पैसे देते हैं, इतनी फीस देते हैं, सुबह से शाम वो स्कूल में पढ़ा रहा है। ऐसे सब हम डायलॉगे बोलते हैं, जो हमारे लिए भी यूज़फुल नहीं है। अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ स्कूल है आईसीएसई। आईसीएसई भी सेंट्रल बोर्ड ही है, इंडियन सेंट्रल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है। उसकी तो एजुकेशन लेवल 2 लेवल्स हाई है, इसलिए वो तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि भाई कैसा आपका प्रायोरिटी है। दिल्ली बेस्ड तो 2 है, एक तो सेंट्रल बोर्ड है, एक तो आईसीएसई है। आईसीएसई के नंबर ऑफ स्कूल्स कम है कंपेयर टू सीबीएसई। गुजरात बोर्ड, सीबीएसई, गुजरात बोर्ड सबसे ज़्यादा है क्योंकि आप उसी स्टेट में हो। यदि आप महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र बोर्ड होता है, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की बोर्ड होती है। तो हर एक स्टेट में अपने-अपने बोर्ड होते हैं, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन इंडिया। Okay, now when we are living in India, we have state board, that is GSEB, then we have central board, we have ICSE and IB. IB is international curriculum. वो जो बच्चों को बहुत ही बार पढ़ा हो या बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग किया हो, इज़ वेरी गुड इन द लैंग्वेज, एनालिसिस अच्छा कर लेता है। कोई भी पैसेज हो उसको कैसे एनालाइज करना, अपने तरीके से लिखना, वो आईबी बोर्ड में होता है। और वो नॉर्मली ग्रेड्स वाइज होते हैं, ऐसा कोई मार्क्स नहीं होता। ग्रेड होते हैं ए प्लस ए, बी, बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी तो होता ही नहीं, आप फेल होते हैं। फिर आपको फेल नहीं होने, आपको वापस देना है एग्जाम। तो आईबी बोर्ड सबसे कॉस्टली होता है, मोर देन 1.5 लाख होता है। अभी तो सीबीएसई का भी बहुत सारे स्कूल्स में 1 लाख तक लेते हैं, आईसीएसई भी 1 लाख ले रहे हैं। पता नहीं बच्चों की पढ़ाई क्यों ये लोग इतने सारे लेते हैं। मैं आज भी यकीन नहीं करती कि कोई भी पढ़ाई इतनी कॉस्टली होने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा बहुत टीचर्स की सैलरी अच्छी हो सकती है ऐसे स्कूल्स में, क्योंकि उनको पर चाइल्ड 1.5 लाख मिलता है। तो हर एक क्लास में वो लोग सबसे ज़्यादा बच्चे रखते हैं, 45 मिनिमम रखते हैं। तो 45 में तो कोई बच्चा, आप सोच भी नहीं सकते कि वो टीचर को पता भी चलेगा कि 45th वाला या 40th या 2nd या 20th रोल नंबर वाला कैसा बच्चा है। वो तो गेस वर्क करते हैं जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो आपको जब छुटपन में बिटवीन 3 एंड 7
ईयर्स के जब बच्चा होता है 3 and 7 years में, 3 years में नर्सरी, 4 years में लोअर केजी, 5 years में अपर केजी और 6 years में फर्स्ट स्टैंडर्ड। अभी लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, उसमें वो है कि हमें एग्जाम नहीं लेना है सेकेंड स्टैंडर्ड तक। वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इट विल टेक 2 more years to implement because the books have to be designed, the assessment work has to be designed. All that work is going on, and the COVID is also a source where the schools are not opening, and therefore they get some time to make the entire foundation and the framework of how things will continue in the schools. ओके, जहाँ तक स्कूल्स के एडमिशन के बारे में है, आपको खुद सोचना है कि यदि आप किसी देश में किसी स्टेट में रहोगे ज़्यादा, तो गुजरात स्टेट बोर्ड एवरेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई अच्छा है क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छा है। आईबी बोर्ड तो वैसे ही आप जानते हो, उसकी जिसको बाहर जाना है, जिसके बच्चे को इंडिया में नहीं सिखाना है, क्योंकि आईबी बोर्ड इज एप्लीकेबल देयर, सेम क्वेश्चन पेपर स्टाइल भी फॉरेन कंट्रीज में होता है। तो इसके वास्ते और हर एक कंट्री में आ जाए, मैंने बहुत कंट्रीज विजिट किए हैं जस्ट फॉर एनालिसिस ऑफ द एजुकेशन। I have visited various countries, European countries, to analyze the educational system as a principal. तो मेरा लेन देन सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स होते थे, एंड आई टू टीच देम how to make a project, the culture of India, the values and how we greet people in India, not like them. But the biggest analysis that has been done is that every school teaches music, teaches you know, gymnastics, yoga, interdisciplinary teaching, and integrated learning. That is very good. I think even if here in the state board, or now central board has also started integrated and interdisciplinary teaching. That is very, very good, and that's the best way of teaching. It's not that if I'm a management teacher, so I teach business management, I teach English language, I teach communication, I can teach economics, entrepreneurship. So these are all the ways where we can integrate. Now it's not necessarily that I myself teach, but if I have another teacher who's also with entrepreneurship, she can also teach business management. She can also teach economics. Only thing with textbook is different, but the content you have already learned in your post graduation year. So it becomes very easy for children and parents. Now, I hope after my lesson, life lesson 3, I've given a short introduction of the various types of schools. Which type of school you want to take or admit your child. Now, what happens to the child is the secure feeling that the child feels, and what you can do, you can get up whenever you want, go to the P anytime, or just have something which you like. Just ask for some ice cream, or go and take the biscuits, and you know, just jump around and play with the doggy, and go out for a walk, have your cycle, tricycle. That's all in the home. But in a school, you're supposed to sit on a table, on a chair, wait for the teacher to come. Different teachers come at different times. So you have one tutors, or you have a single teacher with different things. In little classes, we have a group activity, or I think it's such a way that 4, 5 children are there together. What happens there? The child is actually put behind a table, and those children who are active would not like to sit there, would like to go and see what the other child is doing. So what happens is what the child is thinking is different. When the parents come to see how is the progress, oh, what my child has he done any drawing, has he learned anything in school? He doesn't tell anything at home. How can the child remember anything at home that must be so different? Oh, it's so lovely for them, so free. They're so happy that they're back home. The parents that every day must say, have you brought your pencils back? Have you brought a different box back? And every time the child forgets. It's after a week or 15 days the child forgets. He forgot about it. Or may not keep the
tiffin box in the bag. So the mother starts, how many tiffin boxes will I buy? How many pencils will I buy? How many rubbers I have to keep buying? I don't understand what your teachers do. They don't take care of you. It's very easy to point a finger at others. But remember, when you're pointing your fingers to others, these four fingers point back to you. Check. Have you taught the child that whatever the child takes one of it and keeps it back? You're so easily used to pointing our fingers at others. You can always do it yourself too. The teacher may have, an assistant may not have. If she has 40 or 45 children in a class, just imagine what's happening. And the growth that is there for a child from 3 to 7 is only through observation and listening, writing. What the child has done till 3 is just observing. And if the mother keeps telling no, 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 if you don't drink your water, if you don't drink your milk, if you don't eat your snacks, I'm going to lock you up in the room. The child is screaming and shouting. Or I put you in the bathroom. My gosh, it's the worst punishment you can give to any child. Why do you need to punish a child? What do you mean? Tell the child, better you have some. He says, oh yeah, we have it. Fine, keep it there. After some time, you have to vomit again. That's all. If it's something warm, keep it in the microwave or whatever you have at home. It may take time. The child learns to do things on their own. They try to put the switch on and you give them one tight slap. You told lies, one tight slap. My God, what are you doing? I have seen it myself. We had called a parent for a meeting, and the child was a little naughty in the sense the child was had a habit of beating other children, or just pulling the leg of a child. The child would fall off when the child gets up, or take away the compass box and make the child cry and shout at the teacher. That is why, because the child wants attention seeking. As soon as we told that, the father took his hand and gave one so tight slap on the child. The child was a small child, and the child just kept just crying. And got used to the beating and torture at such a young age. We told the father separately and talked to him. He said, I'm very disappointed with your nature. I don't know what to do at home. In the school in front of me, we are waiting, we're talking to you, discussing with you. We were thinking of various things that can be done. You call the child and you give him a slap so tightly. You should have just told him better. I mean, you should be better. I will talk to you later. That would have been a better father. Or some fathers, as soon as they know that the child has done something, they find it as an excuse to say that yes, yes, I had told him this at home. Only. He does the same thing at home. Yes, yes, give him out, give him two, put him out of the class. My God, what are you doing as a father? What kind of support are you giving? You're insulting the child. At any age, remember that, parents. At any age, your insult is very, very painstaking for the child. It hurts them in their heart. You don't believe it, but it's true. I took the child, put it on my lap. The father has other expectations. For some parents, also other parents were waiting in line, but I told him that the father has other expectations. He has beaten me today, but he will have to change. He will have to change to get to his goals. The child was so happy. I gave him the chocolate and a feel good badge. When I gave him a feel good badge, he was so happy. There was those nice yellow badges that we give the children. Oh, it's so wonderful. And therefore, the child requires time, requires appreciation. Even if he's not good in his activity, please tell that you can do it better. Don't say you're
It's all good. Why am I wasting my money? Why am I paying the fees? Don't do that. Don't accuse the child. The child will repeat the same thing in his life. Even if he grows, he will remember these words. He will remember how the parents beat with the belts, beat with the sticks. The mothers take the time because she is making her chapatis. With that stick, she gives a nice smile. Oh, it's very painful. Try yourself. So, parents, I request you. You can show the rod, but the child needs love, care, understanding. The child may ask you hundreds of questions. Why is it so sunny today? Why isn't it raining today? Oh, the peacock has come here. Isn't it very hot for the peacock too? These are so beautiful questions. And you must be happy that your child interacts with you. Children, as they grow, they stop the interaction. They're all on their, what they do? They're either busy with the friends or the parents, and everybody are busy on the mobile or looking at all these. Horrible. What do we want? Why are we creating it as a space? What do you want to achieve? Nobody should laugh. Oh, nobody should smile. Oh, nobody should talk loudly. Oh, there shouldn't be loud noise or singing. Why not? Let there be good vibrance in the house. Sing together, dance together, play together with the child. Give the child different types of things to play. Let the child learn to count. Let the child feel different objects. There are objects which are smooth. Yeah? You may find this as smooth. You may find this as soft. You may find so many objects in your house. Just let the child be what the child is. That's the fun of taking care of a child. Not by beating them, humiliating them. Even if they grow up to the age of 25, I think humiliation is the worst way to take care of your child. And you think you're an egoistic, self satisfied person? That is the last thing you will do, even before your death, to humiliate a child or to beat a child. Never do that. Never. The child will always remember my father, my mother did not love me, did not care for me, is not bother for me. So, parents, love yourself. I made videos on how to take care of yourself. If you take care of yourself, you'll be able to take care of others. You'll be able to communicate. Every person needs a loving gesture. I'm not saying that always lovey-dovey the child, always keep the child. No, you can always keep the child at a distance. But see that you talk to the child. Don't nag the child. Don't irritate the child. Always say, "Get me water. Get me the vegetables. Get me the bottle. What are you doing?" Every time, "What are you doing? What are you doing?" Because the child gets irritated. It's so horribly annoyed with whoever it is, whichever parent. And if you as parents don't have time, you give it to them. Maid servants who take care. आप क्या करते हो? आप बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारते हो। जो भी चीजें आपके हाथ में आते हैं, उससे मार लेते हैं। कभी बेलन यूज कर दिया, कभी बेल्ट यूज कर दिया, कभी चीजें फेंक दिया। माय गॉड, वो बच्चा को इतना ह्यूमिलिएट होता है। बच्चा भले 3 से 7 या 7 से ज्यादा हो, बच्चा को हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आप यदि प्यार नहीं दोगे चाइल्डहुड में, वो बच्चा जरूर बड़े होके आपसे दूर भागेगा। आप नहीं मानोगे, ये मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है। जो बच्चों को बेल्ट से मारा गया, बच्चों को डंडों से मारा गया, बाथरूम में बंद किया, रूमों में बंद किया, वो बच्चों ने वो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब मौका मिलेगा और कॉलेज में एडमिशन होगा
तो मैं ये घर से काफी दूर भाग जाऊँ। क्यों? उसको प्यार में, उसको हमेशा दुत्कार, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट मिली। तो डियर पेरेंट्स, आपको बहुत 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 ही साइकोलॉजी, पेरेंट साइकोलॉजी बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को मेरे स्कूल में बुलाती हूँ। इनिशियल जब हमारा इनविटेशन या हमारी जब प्रोग्राम्स होती है जिसमें हम पेरेंट्स को बुलाते बात करते हैं, तो पहले यही बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को बड़े बड़े मोबाइल रख के मत दो कि हाँ बच्चा बढ़ गया, मैं आटा गूंद रही हूँ बच्चा बढ़ गया। आपको ये नहीं पता चलता, इससे आपकी और बच्चों की दूरी होती है। हाँ, बच्चा आपकी साड़ी या पल्लू नहीं पकड़ेगा, लेकिन उसको आपको प्यार कीजिए। आप उसके साथ खेलिए, आप उसके साथ गाइए। उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स, तबला या शटल कॉक ये वगैरह लाइए ताकि बच्चा खेल भी सके। आप जितना खेलोगे, जितना आप उसमें इन्वॉल्व होगे, उतना ही बच्चा आपसे प्यार करेगा। और बड़ा होगा उसको यही याद रहेगा कि यस, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जो मुझे करना चाहिए। और यदि आप देखते हो कि आपकी बीच में एज पेरेंट्स समझिए, आप कोऑर्डिनेशन में बच्चों के सामने कभी भी नहीं बताना, बच्चों के सामने कभी भी पेरेंट्स को झगड़ना नहीं चाहिए, कभी भी एक दूसरे को नीचे दिखाना नहीं चाहिए। अपना खुद की जो दिमाग है वो थोड़ा ठंडा रखिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें कुछ शक्ति दीजिए कि आप अपने आप में अच्छे दिखे और दूसरों माने अपने आप की अच्छाई देखें। दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, वो आप आपकी अच्छाई देख के वो खुद ही बदल जाए। बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो बदलते नहीं, अपनी ही दुनिया में होते हैं। ठीक है, वैसी भी एक दुनिया है उनकी, जीने दीजिए। तो आई एक्सपेक्ट your parents have learned quite a lot in this life lessons too. I've given them all about the different types of schools that are there, the psychological motto, and the immense love that we as parents would love to shower on children, and not to humiliate them, not to beat them up. Anything, not even your hand, just show them your hand. Talk a little loud. Okay, not irritate them, but every 5 minutes go on scrolling. So see that your child is a gem, is a beautiful stone that's available. It's not available in gold or silver or diamonds. They are your true diamonds. Every child is a diamond, not only for the child, but for humanity. So let us recognize our child. There's something everybody of us has to contribute to the world before we are called back. So let's assume that life lessons 1, 2, and 3 are heard properly, are understood, and I have a lot of expectations of the parents, and I hope that it helps them to understand their child better, nurture their child better, love them, because a child also needs love. Accept each child as they are. We can teach them different languages. We can teach them different, make them better, in better skills in communication. But anger or beating a child is not the way to train them. Wishing you good love lessons throughout your life, and hope to see you. And I hope you see and share this video to all your friends so that many more are benefited from such videos.